So let's see the chapter The Little Girl. Little Girl is a story of a girl whose name is Kezia. This story is written by Catherine Mansfield. The theme of the story I have written here, you need to go through the theme so that the story should be clear in your mind, that what is the emotion of the story which is related to the mind of author, writer and the reader as well. The theme of the story is the little girl of the story refers to the main character that will come across. Here, the little girl named Kezia. She is the center point, you can see. She is the center point of this story. Means the most of the thing which is related to the Kezia will be discussed in this story. So the theme of the story is the relationship between children and their parents. And the writer wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. Although when children are small, they are young, they don't feel love because their parents are strict and many actions of the parents seems unjustified. But as children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children, and this bond of love between parents and their children has been highlighted in this story. Let's come to the point, what happened. As a child, as a normal person, what we feel when we see some strictness around us, when we are said not to do this such kind of work, we feel that this particular person does not like me. That's why he is or she is trying to force me not to follow. So it seems like that in the mind of the person to whom we are thinking that he is a cruel person. He is a very strict person. He does not like anyone. अब यहाँ पे एक स्टोरी में आता क्या है कि उस लड़की को, केजिया को ये बात समझ में आने लगती है कि उसके फादर जो है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. वो उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो हमेशा बहुत टाइट रहते हैं केजिया के लिए. उन्हें लगता है, केजिया को ये महसूस होता है, केजिया ऑलवेज फील्स दैट ही डज नॉट हैव प्रॉपर हार्ट, he cannot be melted and he never thinks about his child. So that's why she expressed her own words that his father was a kind of a demon. She compares her father with a demon. Demon means Rakshas. As because his body was too heavy and whenever he yarns means होता है जमाई लेना, मुंह खोल करके, तो she gets frightened. As because she never felt any softness. She never felt any softness in his voice. He never pat her back. He never does anything which seems like that Kezia think that he loves me. So that's why Kezia always gets frightened to see her father. So here what happened, it is being told by the writer that all the children, those who are feeling that my father, my brother, my sister, my mother, all the caretaker, those who are forcing me, those who are showing strictness, it seems like that they are not kind-hearted person. They always hate the children, but it does not happen. As the child grows, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसे एहसास होने लगता है कि नहीं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे रिलेटिव्स, ये जो मेरे लिए इतने कड़े शब्द का यूज़ कर रहे हैं, कड़े तरीके से मेरे ऊपर जो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मुझे कोई ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे बार बार किसी चीज़ों को ना करने के लिए कह रहे हैं,
वो शायद मेरे लिए सही था वो टाइम, क्योंकि उस टाइम हम जज नहीं कर पाते हैं. वी वर नॉट एबल टू जज ऑन दैट टाइम बिकॉज वी वर यंग. हम छोटे थे तो हमें पूरी इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए थी. और वो फ्रीडम को अगर बड़े थोड़ा कर्टेल करते हैं तो उस टाइम लगता है कि नहीं, ऐसा जो कर रहे हैं ना वो शायद वो समझ नहीं रहे हैं, मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं. लेकिन वो सारी फीलिंग्स को समझ रहे हैं. So it seems like that जैसे एक कुम्हार को मिट्टी बनाते वक्त तुमने देखा होगा कि वो मिट्टी को भी थोड़ा धीरे धीरे थपथपाता है ताकि वो शेप लेकर के सुराही बने. नहीं तो वो मिट्टी को अगर इसी तरह फ्रीडम छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी फिर से वो गिर जाएगा नीचे. तो इसी तरीके से पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें पता है कि किस वक्त में इनको फोर्स करना है, किस वक्त इन्हें डांटना है, किस वक्त इन्हें जरूरत पड़े तो पनिशमेंट देना है, जरूरत पड़े तो इन्हें हार्ड इनके साथ थोड़ा सा हरास तरीके से आना है, सो दैट यू कुड बी शेप्ड, आपके लिए, क्योंकि आप उसके शेप में आ जाए. So this story is related about this, that when the Kezia knew that his father, when Kezia knew that her father is a very strict kind of a person and he does not love anymore, she compares her father to MacDonald. Who was MacDonald? MacDonald was the neighbor of Kezia. MacDonald was the neighbor of Kezia. यानी उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था MacDonald. उसके बच्चे थे और MacDonald always loves a lot. It seems, and he shows that his children, they were playing on his body. He was spending a lot of time, and Kezia watches every time and thinks that my father does not spare time for me. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, मेरे साथ खेलते नहीं हैं, मेरे साथ हंसी मजाक नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ डांटने में ही लगे रहते हैं. तो ये केजिया को ये महसूस होता है क्योंकि वो कंपेयर करती है किससे, मैकडोनल्ड से करती है. लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि जब केजिया एक बार क्या होता है, वंस केजिया थॉट दैट आई शुड डू समथिंग, बिकॉज ग्रैंड मदर जो घर में होती है वो कहती है कि देखो योर फादर्स बर्थडे इज कमिंग, तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तो यू शुड प्रेजेंट समथिंग, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने फादर को कुछ प्रेजेंट देना चाहिए. सो शी थॉट एंड थॉट अगेन एंड अगेन, बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. But suggestion came in her mind, and grandmother told that you should present something. So she thought to present a cousin, pin cousin, you know, जिसमें पिन वगैरह डाल करके लोग रखते हैं, जैसे पिन आया तो इसे डाल दिए, तो एक पिन कसिन बनाने के बारे में सोचती है. She thought to create or prepare a pin cousin. So that's why she started finding out the small tiny piece of paper. She wanted to get it at any cost. So that's why she roamed and went into the bedroom of his father, where she saw that there was some fine papers were lying. उसने देखा कि कुछ बहुत अच्छे किस्म के पेपर, साफ सुथरे पेपर उसके टेबल पे रखे हुए थे. Kezia thought that this could be the fine one, and if I cut it into small pieces and stuff into a cloth and sew it from all the direction, it will be called a good cousin. तो एक अच्छा cousin बन जाएगा. तो उसने देखा नहीं, समझा नहीं कि ये कौन से पेपर है, and she took the paper and tore it into a tiny pieces and stuffed in all three direction. 3 डायरेक्शन से उसने पूरे स्टफ किया. फाइनली उसने प्रॉपरली उसे स्टफ करके और सी करके शिव करके रख लिया. एंड शी थॉट दैट आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क एंड आई विल प्रेजेंट माई गिफ्ट टू माई फादर. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड इट सीम्स लाइक दैट शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट वंस आई present this gift to my father will be happy to see the gift. That night what happened, when Kezia's father came and started asking that where are the papers. She could not understand what is happening. The whole houses, the people were searching the papers, servants, her mother, grandmother, everyone. Suddenly what happened, her mother came and asked that Kezia, did you see your some fine papers of your father? She didn't say. Did you take it? She told yes. But that was the moment. Where is it? I just tore it into small pieces and stuffed into the cousins. She was very angry. She just dragged out to her father. और वो उसे खींचते हुए लाती है, उसके पापा के पास लाके उसे रख देते. सी इज द गर्ल एंड सी हैज डन.
My father was very angry as because that paper was a document of a speech where the next day that speech was to be delivered by his father. So it was very important one according to him. So that's why he bit 2 or 3 sticks and kept in a single room. Kezia was crying and thinking that what did I do, I could not understand, but she was bitten. It was a great punishment for her, and she thought that my father is really a kind of a butcher. See, he is a kind of a demon, he has no kind, he is not a kind-hearted person, and she was crying. Suddenly, after some time, grandmother came and she lolled down, वो उसे क्रडल करती है झूले पे एक तरह से गोद में रख करके, और महसूस कराते हैं कि नहीं, तुम्हारे पापा के वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उनसे सॉरी बोलना चाहिए. सो इन सच ए वे दिस हैपन्स, ऐसी चीज़ें होती है. अब वो लास्ट में वहाँ से एक दिन माँ जो होती है और जो उसकी मम्मी होती है वो बीमार होती है और सारे लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, बट केसिया वॉज स्टिल इन हर हाउस. और उनका एक नौकर होता है जो उसका केयर टेकर के रूप में घर में रहता है. अब केजिया को बुखार हो जाती है. सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड सी वॉज नॉट एबल टू इवन स्लीप बिकॉज व्हेन शी स्लेप्ट शी फाउंड दैट देयर वॉज अ नाइटमेयर. नाइटमेयर मीन्स होता है रात वाली खतरनाक से जो सपने होते हैं, वो उसके सपने में आया. देयर वॉज अ बूचर इन हर ड्रीम. देयर वॉज अ बूचर. ही हैड अ नाइफ इन हिज हैंड एंड अ पीस ऑफ रोप. उसके हाथों में रस्सी थी एंड बूचर जो था वो उसके करीब आ रहा था सपने में. वो घबराई, जोर से चिल्लाई. तभी उसने देखा कि somebody came and just took her in her arm. और उसने देखा कि उसके कोई आए और अपनी गोद में उसे उठाए. इट वॉज कोई और नहीं था. इट वॉज none other than he was her father. तो वो उसके फादर थे और उसे गोद में ले जाकर के बहुत प्यार से उसे रखते हैं. एंड फाइनली शी न्यू दैट माई फादर इज नॉट सो बैड एज बिकॉज ही इज बिजनेसमैन, ही इज अ सर्विसमैन. सो ही डज नॉट हैव प्रॉपर टाइम लाइक मैकडोनल्ड की तरह. उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, इतना खेले. बट रियली उस दिन केजिया को ये महसूस हुआ, केजिया फेल्ट that my father's heart is too big. मेरे पापा का जो हार्ट है वो रियली में बहुत बड़ा है and he loves a lot. And this way the story gets over. And finally, as I told you, the theme of the story, जैसा कि मैंने थीम में भी बताया कि वो जैसे फर्स्ट टाइम में उसने अपने पेरेंट्स के बारे में जो एक इंटरप्रिटेशन बना रखा था, जो एक थॉट बना रखा था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं. बाद में उन्हें पता चलता है उसे कि कैसे ऐसा जो मेरी थॉट थी वो सारे गलत थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. बिकॉज स्ट्रिक्टनेस डज नॉट मीन दैट, स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं होता है, स्ट्रिक्टनेस डज नॉट मीन दैट द पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अ वेरी गुड हार्ट. स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज शोइंग स्ट्रिक्टनेस, showing the discipline, showing the and trying to shape you, it seems like that he or she wants to see you in for your bright future. He or she wants to see you at the top of your career. That's why he or she wants to just shape it. So this is the summary of this story that we learned today, and now we will go line by line after this. Okay.